हैं, पूछते हैं कि पिच डेक कैसे बनाई जाए, इसको दूसरों से अलग कैसे बनाया जाए, इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट कैसे होंगे, हमको इन्वेस्टमेंट कैसे मिलेगा। तो इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए टुडे टू लर्न हाउ टू मेक एन इफेक्टिव पिच डेक वी हैव विद अस वेरी knowledgeable and an expert mentor, Mr. Saurabh Khandelwal. I, from the entire team of JIC, Mr. Khandelwal, welcome you to this beautiful session, and thank you so much for taking out this time out of your busy schedule. I think viewers are waiting कि कब हम अपने mentor का कब हम अपने गुरु का इंट्रोडक्शन देंगे, उनके बारे में और बताएंगे। तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। When I read your bio, I was amazed कि मैं क्या क्या बताऊं। But थोड़ा सा, if I'm not wrong, Mr. Saurabh Khandelwal is a serial entrepreneur, marketing wizard, and startup mentor. You're a growing passionate and expert in almost every field which is required to grow a startup, like marketing, branding, networking, resource, etc., etc. Currently, Saurabh sir is working for one of the most biomedical startup, T-Kare, also with ACIR as Assistant Operational Director. He is a mentor for more than 12 organizations and provides mentoring to approx 80 startups. That's amazing. That's amazing, Mr. Khandelwal. Not just this, in 2019, Saurabh received Young Entrepreneurship Award in Delhi for the company named Sales for You. Now, what is Sales for You? Sales for You is the company founded by Mr. Saurabh Khandelwal itself. He was the founder of this company, which that company in just 8 months had 60 plus employees and 12 clients. Also, he was the part of Jagriti Yatra, a 15 days train journey to create an enterprise all over India trip was funded by the CMO fund of Orissa. But the most important thing that in this Sales for You, Saurabh raised 50 billion, from the investors in the US. Saurabh raised 50 millions for Sales for You from investors in the US. So I think viewers को पता चल गया होगा कि इस स्टेटमेंट से ही viewers को पता चल गया होगा कि पिच डेक में महारत हासिल करने के लिए सौरभ खंडेलवाल की अलावा और कोई भी अच्छा मेंटर नहीं हो सकता. So once again, I welcome you, Mr. Khandelwal, and without taking much of your time and viewers' time, the stage is all yours, sir. Please go ahead. So, good afternoon, everyone, and thank you so much, Aarti, for this beautiful introduction, I must say. So, almost you cover anything, and it looks like I'm someone who is in very hype. There are few points which I noticed when you are introducing me, right? So, like you told that Peace Tech is something which is kind of very important to generate maybe to raise fund, right? And sometimes you also mentioned that investment is something investors are like crux of these startups, like the very major part of these startups. So here I want to correct you. And the third point is that definitely I'm not the only one mentor who will guide or maybe suggest you of the great point to create a pitch deck, because pitch deck it's a vast thing and everybody have different opinion on the pitch deck, right? So maybe I have a different perspective from my experience of 5 years, 6 years in this startup ecosystem, what I learned and what I saw during this journey. And second thing, yes, so फॉर एनी क्रक्स और जो हम जान की बात कर रहे थे कि स्टार्टअप्स के लिए जान, सो ऑफ कोर्स दैट्स नॉट इन्वेस्टमेंट, दैट्स द टीम, लाइक your core team and your business model and how dedicated you are. Investment is something you need to grow up your startup, but not to run your startup, right? And Pitch Tech is not only just to showcase the investor and to raise fund, but
pitch deck is something which you can also elaborate about your business to others. You can make them understand, because we not only use pitch deck while we go for investment like presentation, but also we use our pitch deck in different conference or in different marketing places, right? So that's how. And today, Right. yeah, I'm really fortunate, and I'm really thankful to Jabalpur Incubation Center. So you guys are doing so well, like in the area of Madhya Pradesh, where entrepreneurship, this basic word is in fact, like, you introduce these words in the entire state. I can proudly say that, right? So, yeah, thanks to having me. And So during the sessions, I request all the audience to put their queries, their questions, because I love to take interactive session rather than showing a boring PPT to all of you. So, if you have any doubts, if you have any questions, or if you have any questions related to your startup, so just put those in the Facebook comment box, right, Aarti? Or maybe in YouTube. yes, sir. Yeah. So Right, all right. the social media you were On active. YouTube and Facebook comment. Right. Yes, yes, And correct. probably Aarti is going to tell me all those questions because not visible to me. I'm in a different stream yard software. So yes, first we'll I will. That's why I'm here, yes, sir. yes, Aarti. Yeah. And yeah, so we can start with what is a pitch deck. So Aarti, you almost cover all the points that what is a pitch deck, and you also asked the audience that if anybody is there, they have idea what is a pitch deck and what it looks like. So do we have any answer in the comment box, or still the audience are just active and listening to us very carefully? You are on mute, Aarti. They all our audience is very keen that when our mentor will tell what is actual Oh, pitch deck. that's great. Then we don't have any answers from audience side, so we can say probably what we know, and they are going to agree. So, see, a pitch deck basically, I can say a pitch deck is a presentation which can represent your business model, and about your business idea, about how you generate revenue, about your team, about your future plan, everything. So it's a summarized talk of everything what you are doing in your business and what you are planning to do in your business, right? So a pitch deck is a summary basically, and every time it's depend, right? Like whenever you are going to present a pitch deck to investors, so it's look different. Whenever you are going to present your pitch deck to your employees, because some of the time we do so in orientations program, so that's look different. And when we present our pitch deck to some of our customers, so that looks different, right? So today we are going to discuss some of the key points, or I can say probably the points which are equal for everyone. Like no matter you are going to present pitch deck to investors, so how it's gonna look like, and how a presentation for orientation program, or for business development, or for client acquisition is going to be look like, right? So a pitch deck is basically a summary of your entire business strategy, business plan, team, and future plan. So that's the summary, right? And this is how a pitch deck look like. And there are like me, I have a different opinion for pitch deck. Aarti have a different opinion for pitch deck. Every individual have different opinion and content for pitch deck, but globally we accepted that the pitch deck must have all these things, right? Introduction about the company, about your team, and that's different. Like where you are placing introduction, where you are placing team. So some of the companies or some of the founders, entrepreneurs place teams right at the last, right? Even I do prefer that, and some of them prefer to place that in first. So that's actually depends on us how we are doing so. But these are the content which are really must you need to be have while you are preparing a pitch deck. So first thing is about your introduction, about your company and your company name, of course. Team, of course, you need to present your team who are working on that idea, because it's very true. And from my experience what I learned is that पैसा बिजनेस पे नहीं लगता, पैसा टीम पे लगता है. एंड इन्वेस्टर्स आर
two way beyond than our thoughts, right? So they know कि अगर ये इस काम को कर रहा है, okay, I am from hotel management background and I am running a company which actually provides services to hotel and restaurants. So definitely they have an idea, okay, there is a guy who have some background, who have some experience from this industry, so he can make it, right? So that's the reason team slide is very important as well, for gaining the investment, and the problem statement, that what kind of problem you are trying to solving, and advantage, some may say it like advantage, USPs and all, right? And then solutions, of course you have problems, you know your like unique selling points, and then you went to solutions, that what kind of solutions you are providing. Then of course your product or maybe software service, whatever. Traction, so till that, what are the traction you did, the market, how big the market is and how competitive the market is. And you need to be have about competition, like who are your competitor in your market. So sometimes I'm really surprised to see that some of the startup told that we have no competition. So again, if you don't have a competition, so you don't have a business, right? Because we are not Einstein, what I believe that we can create a new bulb theory, something like that, right? And of course business model, invest, and the amount you are looking for from investor side. And the most important one, contact, because what happens is sometimes some of the entrepreneur and startup just forget to mention their contact details. So let's say I'm an investor and I really liked your idea and I want to connect with you, so I'm not going to hunt your company name in Google and all after seeing your introduction slide, right? I must looking for your direct contact number, so it will be very easy to access for me. So you need to be have a perfect and correct contact details in the contact slide. So of course we already discussed that how a pitch deck looks like, उसमें क्या क्या होना चाहिए, कैसा बनना चाहिए, and थोड़ा बहुत तो हमने अभी तक डिस्कस कर ही लिया. Now we'll go for कि ओके आपने ये बता दिया कि पिच टेक कैसा होता है, कैसा दिखता है, क्या क्या कंटेंट होना चाहिए. कंटेंट वाले पार्ट में विल गो फॉर मोर डिटेल्स कि और कंटेंट कैसे होने चाहिए, बिकॉज वी जस्ट डिस्कस वेरी शॉर्ट समरी अबाउट ऑल द स्लाइड्स, राइट? Now we'll discuss what we need to do and we don't need to do in the pitch deck, because these are some of the major mistakes I notice entrepreneurs do while preparing a pitch decks. So these do's and don'ts are very common for all kind of pitch decks we are preparing, maybe for investors, maybe for orientation, or maybe for business presentations, right? So of course pitch decks, sometimes what I found is कि कुछ लोग pitch decks लेके आते हैं with 32 slides, 42 slides, 20 slides, right? So that's not a pitch deck. आपको बहुत कुछ pitch deck में नहीं डालना होता है, and whenever you are pitching, so you need to pitch your business as a story. You should start with introduction that yes, I am Saurabh Khandelan, I am graduated as a BSc in hospitality and hotel management, and during my studies I noticed that there are few problems in the hospitality segment, and somehow I come up with this idea. So that's how you need to engage and relate with the stories, right? So जब मैं कोई स्टोरी बोलता हूँ तो हम सब, ये साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप जब भी कोई स्टोरी बोलते हो और कुछ ऐसा कंटेंट बोलते हो जो एंगेजिंग हो, तो ऑडियंस बनी रहती है, वो आपको सुनते रहती है. अभी अगर मैं बस थ्योरीज में चला जाऊंगा एंड आई स्टार्ट रीडिंग आउट दोज थ्योरीज एंड यूजिंग सम बज वर्ड्स लाइक we use in conference and business, so maybe we'll not got the audience engagement, right? So we need to be tell our story, like this business idea as a story, कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया, आपने क्यों स्टार्ट किया, आपको क्यों लगा कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट वैलिड है. तो जब आप अपने आप से या फिर किसी और के डेली रूटीन से किसी चीज़ को रिलेट करते हो, तो लोगों के लिए वो चीज़ें समझना बहुत ईजी हो जाती है, राइट? तो यू नीड टू टेल योर स्टोरी एंड एंगेज पीपल इमोशनली. लेट्स से कि आप किसी हेल्थ केयर डिवाइस में काम कर रहे हो, लाइक वी डू इन पी केयर, राइट? सो वेन एवर वी पिच पी केयर, वी इंट्रोड्यूस लाइक कि अभी ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जिसमें आप बॉडी के 14 पैरामीटर्स को जस्ट इन 20 सेकेंड यू कैन मेजर, एंड ड्यू टू दैट देयर आर लॉट ऑफ लाइफ्स वी आर लूजिंग एवरी डे बिकॉज एक्चुअल पैरामीटर्स नहीं मिल पाते, एंड वी नेवर अंडरस्टैंड कि हमें कब डॉक्टर्स को विजिट करना है. So that's how I'm engaged.
we are trying to engage. Every successful entrepreneurs who are rising fund, they always have a story to tell while they are describing about their pitch, right? Of course. So as in initial I told that I noticed some of the times जो startups founders हैं या entrepreneurs हैं, उनकी जो स्लाइड होती है वो 30 स्लाइड्स की होती है, कई बार 20 40, इवन मैंने 50 स्लाइड्स के भी प्रेजेंटेशंस देखे हैं, एंड दोज आर टू बोरिंग. अभी किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 50 स्लाइड बैठ के देखे, भले आपकी आइडिया कितनी इंप्रेसिव हो, आप कितना ही अच्छा कर रहे हो. सो यू नीड टू टेल एवरीथिंग इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. आपको सब कुछ बहुत छोटे से टाइम में सामने वाले को समझाना होता है. यस आरती, यू आर टेलिंग समथिंग. हाँ जी. तो यहाँ पे हमारे व्यूअर का क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया छोटे टाइम में समझाना पड़ता है, तो जैसे फर्स्ट स्लाइड में मैं आपने बताया कि बहुत सारे पॉइंटर्स है जो हमको कवर करने होते हैं पिच डेक में, राइट? एंड हियर इट इज लाइक कि हमें स्टोरी के फॉर्म में बताना होता है. तो 5 मिनट, जैसे बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो 5 मिनट देते हैं क्या, यू हैव जस्ट 5 मिनट्स. तो अगर हम स्टोरी से स्टार्ट करेंगे तो our story will take 5 minutes. People sometimes get emotional and they kind of exaggerate their story, so they get into that story. So whether the story is really important or we can directly pitch, and some of the mentors are really not interested in that story. So of course a great question. Something what I was expecting to be answered, right? So story always need to crisp, like कोई नहीं सुनना चाहता कि आप एक गांव से हो, आपने बड़े बचपन में बड़े मेहनत से पढ़ाई की, आप आईआईटी गए, फिर आपने ये आईआईटी में ये किया वो किया, फिर आपको लगा कि नहीं मुझे 40 लाख के पैकेज की जॉब नहीं लेनी है, फिर मैंने इस आइडिया पे काम किया. नो, डायरेक्टली कम अप टू योर आइडिया, लाइक क्रक्स ऑफ द स्टोरीज, राइट? जैसे कि मैंने बताया कि आई एम होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट, एंड ड्यूरिंग माय 3 year of journey in BSc in hospitality and hotel administration, I noticed few of the problem statement. That's how I relate the entire story, right? And कि मैंने प्रैक्टिकली उस चीज़ को देखा. आई डोंट नीड टू मेंशन कि मैंने 12th पास किया, फिर मुझे लगा कि मुझे हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में कुछ करना चाहिए, फिर मैंने जेईई मेंस दिया एंड आई गॉट एडमिटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज, फिर मैंने वहाँ होटल मैनेजमेंट किया, फिर मैंने आइडेंटिफाई. नो वन वांट्स टू लिसन योर पर्सनल स्टोरी. एवरीबडी वांट्स टू लिसन दैट प्रॉब्लम स्टोरी, राइट? सो यू नीड टू बी very crisp and very concise when you are telling a story. But story is needed because that's the way you can relate. आप किसी से कनेक्ट कर सकते हो इमोशनली, राइट? और आप किसी को अपनी स्टोरी पे लेके जा सकते हो. एंड एवरीवन हैज अ स्टोरी. दुनिया में लाइक बहुत सारी बीमारियां तो नहीं है, तो अगर आप हेल्थ सेक्टर से हो तो आप किसी भी कैंसर एंड ऑल, एक कुछ 4-5 बहुत पॉपुलर बीमारीज हैं, जैसे 4-5 कुछ पॉपुलर स्टार्टअप्स हैं, राइट? सो आप उनमें से किसी को एक को ले सकते हो, एंड यू कैन एंगेज, यू कैन रिलेट योर ऑडियंस. किसी ना किसी को वो हुआ होता है, राइट? हर किसी के फैमिली में कोई ना कोई होगा जिसको कैंसर होगा, मे बी नहीं होना चाहिए लेकिन होगा. दैट्स द रियलिटी. यू कैन रिलेट, राइट? सो दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोरी बेसिकली. सो सब लोग रिलेट कर लेते हैं बहुत ईजिली. एंड ऑफकोर्स आपको सब कुछ नहीं बताना है, आपको बहुत क्रिप्स होना है उसमें. आई बिलीव आरती आपको वो आंसर मिल गया होगा, राइट? और इफ वी हैव एनी डाउट्स वी कैन डिस्कस. यस, डेफिनेटली. Great. Yes, definitely. So what I understood is कि 2-liner story होना चाहिए जिससे आप एक अलग से वो आपके USP काइंड ऑफ, आई मीन यूनिक हो जाओ आप, और उसमें आप अपनी बात भी बोल दो और ज्यादा टाइम भी आपका वेस्ट ना हो, ज्यादा टाइम कंज्यूम. राइट. एंड विल जंप अप टू नेक्स्ट पॉइंट. जब आप बोल रहे थे कि स्टोरी काफी लंबी हो जाती है एंड वी हैव 5 minutes, सो when you are pitching to a investor, so you don't have 5 minutes. Even when you are pitching to a incubation, you might have 5 minutes, 10 minutes, right? But for investors we have initial those 2 to 3 minutes to get their intention or maybe like attraction towards our business model. क्योंकि अगर initially बहुत boring हो जाता है तो लोग आगे सुनते भी नहीं है. They are listening to you but they are not listening to you, right? So these are the few points we need to be very careful while preparing a pitch deck and while pitching, right? So आपके जो स्लाइड्स है वो हमेशा आई कैन से मैक्सिमम 12 या फिर 13 स्लाइड्स के होने चाहिए. एंड दिस ऑल्सो डिपेंड कि जब आप किसी इन्वेस्टर्स को दिखा रहे हो तो मे बी वो 12-13 स्लाइड हो सकता है, बट इन वेरी इनिशियल मीटिंग्स
ऐसा नहीं होता है कि मैं किसी मीटिंग या कॉन्फ्रेंस में गया, वहाँ 10 इन्वेस्टर बैठे हैं, मैंने अपना स्लाइड दिखाया, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन दी और बस इन्वेस्टर्स ने मुझ में इन्वेस्ट कर दिया। दैट्स मिथ। ऐसा कभी नहीं होता कि एक सिंगल प्रेजेंटेशन में आप पे इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो जब आपका किसी भी इन्वेस्टर्स के साथ पहला मीटअप हो और दिस अ वेरी फर्स्ट टाइम यू आर प्रेजेंटिंग योर स्टार्टअप, सो डोंट मेक इवन कि आपके स्लाइड्स 12-13 स्लाइड्स हो, ऑलवेज मेक इट लाइक 8-9 स्लाइड्स। टॉक अबाउट योर business, that's it. You don't even talk about the investment you are looking for, right? So क्योंकि जब आप सेकेंड टाइम थर्ड टाइम उनके पास जाते हो, सो यू हैव द एंटायर थिंग। अगर आप एक ही चीज़ किसी को बार बार दिखा रहे हो तो वो सोचेगा कि आप पे कुछ ग्रोथ ही नहीं है, राइट? लेकिन अगर आप अभी मैंने 8 स्लाइड दिखाया, फिर नेक्स्ट टाइम मैं आपके पास गया, मैंने आपको 12 या 13 स्लाइड दिखाई, जिसमें मैंने और काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर दी। मैंने मार्केटिंग एनालिसिस थोड़ा ऐड कर दिया, मैंने अपने कॉम्पिटिटर्स और अपना जो कंपैरिजन है उसको थोड़ा बढ़ा दिया। सो दैट्स हाउ यू एंगेज। अब एक ही स्लाइड लेके मैं बार बार हर जगह नहीं जा सकता। सो वी आर हियर टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ द स्लाइड्स, राइट, कि आपको कब कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। तो वेरी फर्स्ट जब होता है, जब आप किसी इंक्यूबेशंस के फंड राइजिंग्स प्रोग्राम में हो या आप किसी कॉन्फ्रेंस में गए हो जहाँ पे 10 इन्वेस्टर बैठे हैं, तो यू नीड अ pitch deck which will have like 7 to 8 slides, that's it। क्योंकि 7 to 8 slides 5 मिनट में आप कवर कर सकते हो। बट जहाँ आपकी स्लाइड्स बढ़ जाती है तो ऐसा भी होता है कि हम कई बार हेजिटेट हो जाते हैं, हमारे माइंड में ऐसा चलते रहता है कि जल्दी जल्दी खत्म करना है, तो आई गो टू स्लाइड 9 क्योंकि स्लाइड 9 में कुछ इंपॉर्टेंट रह गया है, स्लाइड 10 में कुछ इंपॉर्टेंट रह गया है। तो इसलिए जब भी आप फर्स्ट टाइम प्रेजेंट कर रहे हो किसी के सामने या फिर ग्रुप में या फिर कहीं भी, तो और आपको क्रक्स ऑफ द स्टोरी बतानी है, तो हमेशा शॉर्ट रखो, उन्हीं चीज़ों को रखो जो आपके लिए लिटरली इंपॉर्टेंट है बताना, राइट? सो वी ऑलरेडी डिस्कस कि फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एंड वी ऑल्सो डिस्कस कि फर्स्ट इंप्रेशन कैसे क्रिएट करना है, राइट? देन एज हमने पहले भी डिस्कस किया कि टीम, तो कई बार क्या होता है, मैंने टीम स्लाइड में भी देखा है। अब जैसे मैंने बीएससी किया, फिर मैंने लाइक लेट्स से IIM अहमदाबाद से मैंने एमबीए किया, फिर मैंने सिक्किम से पीएचडी किया, तो आई सो दैट पीपल यूज टू राइट ऑल ऑफ दोस कि उन्होंने 12th सेंट जेवियर से किया, दैट्स व्हाई इज अ ग्रेट स्टूडेंट एंड ही गॉट admission in NIT, then he went to IIT for MTech, and now he's pursuing PhD from London. So that's not the thing you should mention, right? You need to be very crisp. अगर मैं हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री से स्टार्टअप चला रहा हूँ जो होटल एंड रेस्टोरेंट्स के लिए वर्कआउट कर रहा है, सो आई जस्ट मेंशन कि मैं और मेरे जो भी को फाउंडर्स हैं, how they are related to this industries, or how long they have experience to working in this industry, right? So you need to showcase that. Okay, just one line ki he got the latest degree about that I am MBA from IIM Ahmedabad, and he worked for around 2 years 3 years in hotel and restaurant, or maybe the hotel like opera. So that's need to be very specific mentioned in the team slide. और एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मैंने भी नोटिस किए है, और लाइक मैंने भी उसको मेंशन नहीं किया था, बट नाउ इट इज़ आई एम फाइंडिंग कि जब भी आप कॉम्बाइन एक्सपीरियंस लिखते हो, लेट्स से कि मी, आकृति एंड प्रियंका, वी आर क्रिएटिंग अ स्टार्टअप्स। प्रियंका के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे पास 5 साल का, एंड लेट्स से आकृति के पास 15 साल का। सो दैट्स हाउ यू समराइज, एंड आपको दिखाना पड़ता है कि वी हैव कॉम्बाइन एक्सपीरियंस ऑफ दिस लॉन्ग, राइट? सो वो जरूर आप मेंशन करें। ये मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स डोंट मेंशन दैट, बट दिस इज हाउ यू गेन लाइक maybe attention of the investors. Okay, 25 years of experience, so that's a collective and combined experience of all the team members you should mention, right? And yes, कई बार स्लाइड्स, जैसे अभी हम जो स्लाइड्स, मैं जो स्लाइड्स यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ, सी हाउ द कंटेंट आर वेरी क्रिस्प, राइट, एंड इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। एक रिदम है पूरे स्लाइड्स में। अगर आप स्लाइड्स देख रहे हो पहले, प्लस तो कलर बैकग्राउंड and pardon, color background, the letter I used and the sizes of letter, these are very constant, right? Means अगर आप नोटिस करो पहले वाले स्लाइड्स को और अभी वाले स्लाइड्स को, तो एक रिदम सा जा रहा है, मीन्स वो आंखें उसमें बनी हुई है, कुछ अचानक से ऐसा नहीं आ रहा जो एकदम ध्यान को हटा दे या फिर पूरे ध्यान को अट्रैक्ट कर ले, राइट? So when you are preparing your graphics for this pitch deck, so you need to be very consistent with the look. आपको जो लुक है वो सिमिलर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट पेज में कुछ अलग कलर डाल दिया एंड देन जैसे या जैसा आप स्लाइड चेंज करते जा रहे हो, कलर चेंजेस होते जा रहे हैं,
और जैसे टीम का आ रहा है आपने ये वी आर ग्रेट अचीवर और आपने वहाँ कुछ एकदम ऐसे अलग सा कलर डाल दिया, अलग से फ्रॉन्ट यूज़ कर लिए. So don't do that. Always keep your slides very perfect and with a single color. Use of like 2-3 colors, right? Don't use very multiple colors, right? ठीक है. और फ्रंट के साइजेस कलर्स जो फॉर्मेट्स है वो हमेशा सेम रखना चाहिए ताकि एक कांस्टेंट लूप बना रहे किसी भी चीज़ के लिए. एंड ऑफ कोर्स कई बार क्या होता है व्हेन एवर वी आर प्रिपेयरिंग अ पीस टेक तो हम वहाँ पे कुछ भी नंबर्स डाल देते हैं. लेट्स से कुछ भी अजप्शंस के नाम पे कुछ भी. अभी मैं 200 प्रोडक्ट पर ईयर बेच रहा हूँ एंड इन नेक्स्ट ईयर आई विल सेल 20,000 प्रोडक्ट. हाउ? So you need to be very specific while you are mentioning any number, and if you can sell to 20,000, it's possible you can sell 20,000, right? अभी आप 200 बेच रहे हो लेकिन आप 20,000 यूनिट बेच सकते हो. तो you need to be have an explanation for that कि आप वो कैसे करने वाले हो. 20,000 200 to 20,000 वो ग्राफ कैसे इंक्रीज होने वाला है. सो ऐसे ही कुछ मेंशन मत करो. अगर कुछ मेंशन कर रहे हो तो यू नीड टू बी वेरी परफेक्ट रेडी टू आंसर कि आप वो कैसे करने वाले हो, राइट? एंड येस वी ऑलरेडी डिस्कस कि हमें क्या करना चाहिए. अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं. बाय द वे वाइल वी आर डिस्कसिंग कि क्या करना चाहिए, वी ऑल्सो डिस्कस कि क्या नहीं करना चाहिए. बट वी कैन गो फॉर लाइक द स्लाइड्स. येस एज यू आस्क्ड मी कि बुलेट्स पॉइंट यूज़ करना चाहिए, ऐसा कुछ मेंटर्स बोलते हैं या फिर कुछ इंक्यूबेशंस का बोलना होता है. सो बुलेट्स पॉइंट्स इट्स फाइन टू यूज, बट समटाइम्स क्या होता है कि पूरे स्लाइड्स में बुलेट्स पॉइंट ही होते हैं. लाइक यू स्टार्ट और वी आर डूइंग दिस, वी आर डूइंग दैट, वी आर यूनिक फॉर दिस, वी आर एक्सपेक्टिंग दिस. सो बुलेट्स पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो वो एक रीडिंग कंटेंट बन जाता है. फिर आप उसमें ट्रैप ऑन हो जाते हो और इन्वेस्टर्स भी कई बार, बिकॉज वी रियली फोकस्ड कि क्या लिखा है बुलेट्स पॉइंट में है मतलब सब कुछ इंपॉर्टेंट होगा, राइट? तो अगर सब कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होगा. सो यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक. जब आप बुलेट पॉइंट्स भी डाल रहे हो तो बहुत सारे बुलेट्स पॉइंट नहीं होने चाहिए, राइट? एंड येस एज वी डिस्कस कि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहिए. मतलब 38 स्लाइड 40 स्लाइड्स भी बना लेते हैं लोग प्रेजेंटेशन. सो इट्स गुड टू हैव एन 38 स्लाइड्स प्रेजेंटेशन while you are preparing a college project. But while you are preparing a pitch deck, so you specifically need 10-12 slides. That's it. Okay. And yes, आप पीपीटी को बिल्कुल जैसे अभी मैंने ये पीपीटी बनाया है, आगे भी अभी जो हम मैं इस पे ही रिलेटेड है, लाइक विल प्रेजेंट द पीपीटी. सो आप देखोगे कि लाइक उसमें मैंने बहुत सारा कुछ लिख दिया है, राइट? सो जब आप इतना कुछ लिख देते हो तो आप कंटेंट पढ़ना चालू कर देते हो, बिकॉज यू थिंक कि आपने जो लिखा है या आपने जो मेंशन किया है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेदर देन व्हाट यू आर टेलिंग. ओके, सो ऑलवेज कीप योर कंटेंट वेरी लेस इन स्लाइड्स. हमेशा पिक्चर्स डालो क्योंकि पिक्चर्स तुरंत समझ में आ जाते हैं. लाइक अभी ये जैसे बहुत समझ में आ रहा है, ओके दिस गाय इज बोर्ड, बहुत लंबा प्रेजेंटेशन चल रहा है, तो हमेशा पिक्चर्स से समझाना ईजी होता है. कई बार लैंग्वेज बैरियर वगैरह भी होती हैं तो हम लोगों को समझा नहीं पाते, लेकिन अगर आप पिक्चर डाल रहे हो, आप वैसे कंटेंट यूज़ कर रहे हो तो वो बहुत ईजी हो जाता है समझाना. एंड डोंट यूज़ वेरी टेक्निकल वर्ड्स. कई बार जो टेक्निकल कुछ स्टार्टअप्स होते हैं दे यूज़ टेक्निकल वर्ड्स, राइट? लाइक इन हॉस्पिटलिटी आई कैन से PAC, लाइक एवरेज पर कवर, राइट? APC. और मैं डाल दूंगा कि आवर APC इज 200 while other APCs are 500, so we are doing good. So what does this APC means? Average per cover, right? So you need to mention that कि वो क्या है. टेक्निकल वर्ड्स अब जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री से उनको शायद APC समझ में आ जाए, बट जो लोग नहीं है उनको समझ में नहीं आएगा. हेयर यू लूज देम. फिर वो जब उनको समझ में नहीं आएगा तो वो आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, राइट? सो बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए स्लाइड्स में. एंड ऑफ कोर्स वी ऑलरेडी डिस्कस दिस कि कलर, जो कलर चूज़ है या फिर हम जो कंटेंट फ्रंट्स का कलर ले रहे हैं वो भी बहुत रिच कलर होना चाहिए. ऑलवेज ट्राई टू रिलेट दैट विथ योर लोगो. तो वो एक बहुत अच्छा रिदम आता है कि आपके लोगो का जो कलर है और आप पूरे स्लाइड्स में वही कलर डाल रहे हो. मतलब कहीं ना कहीं विजुअल्स बहुत अच्छी हो जाती है. एंड विजुअल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट while you are presenting your presentation to anybody, because sometimes it's a fact that not everyone is listening you but everyone is watching you, right? Someone is watching you. So it's very important to have the right thing while your investors are watching you. Okay.
And yes, we already discussed, don't come unprepared. So whatever you are mentioning and whatever you are telling, always be prepared with the cross questions. Maybe in someone asks like कि मैंने बोला मेरा जो एवरेज पर कवर है, हमारी कंपनी जो दे रही है 200 है, while अदर कंपनीज जो दे रही है वो 500 है. So maybe someone will ask कि आप 200 कैसे कर रहे हो, right? So I don't need to mention that in my slides कि मैं हम कैसे कर रहे हैं, but I need to be prepared with that answer. अब मुझे पता ही नहीं होगा कि what is the difference. कई बार होता है नो लाइक कुछ स्टार्टअप्स हैं जो टेक्निकल हैं, वाइल दिस कंपनी सीईओज आर नॉट फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड एंड दे वर अनेबल टू आंसर कि वो ये कैसे कर रहे हैं. सो यू नीड टू बी वेरी प्रिपेयर. आपको बहुत प्रिपेयर होना चाहिए. लाइक इफ यू आर नॉट इवन फ्रॉम द टेक्निकल बैकग्राउंड बट यू आर प्रेजेंटिंग योर स्टार्टअप, सो यू नीड टू बी हैव कम अप विद द आंसर कि अगर ये पूछ रहे हैं तो इसका आंसर ऐसा हो सकता है या फिर इसका एक वैलिड डिस्क्रिप्शन ऐसा हो सकता है. ओके, and don't use small fronts, of course, like visual nahi hota hai, always use capital and all, right? And yes, we already discussed that what to do, not to do in the pitch deck, and now we will, before going further, how to prepare a perfect pitch deck. So Aarti, I would love to listen if we have any questions or if you have any questions. Yes, Saurabh. Thank you so much. Do's and don'ts, I guess they were really important. वो बहुत ज़्यादा important होती है कुछ भी document prepare करने के लिए. एक question है, Yes. Mr. Abhay Singh Lodi is asking one question. Okay. That what we do when we are going to present our presentation in as a startup idea type competition. An idea is totally new and there maybe not there is maybe not a predefined market. So how can we handle that kind of situation? Okay, so they are into an ideation stage. उनके पास सिर्फ idea है, predefined target market नहीं है. तो इस टाइप की situation को कैसे handle किया जाए? So अभय सिंह लोधी का ये question था. See, always what I'll say is कई बार people come up with an idea and that say कि मुझे ये बोतल बनानी है, I'll make this bottle and I'm looking for investor, then only I'll start working on this idea. I have one fantastic idea. एक ऐसा बोतल बना सकते हैं जो 1 महीने तक पानी को ठंडा रख सकता है. So that's just the idea, right? And now I need investment. मुझे investment मिलेगा तभी I can start working on that because it's very costly to make that bottle, right? And we don't have a predefined market for that. Although there are companies who are making the bottle, but my idea is very unique because this bottle can contain a water which can be chilled for a month and there is no product exists in the market like that, right? तो आप एक यूनिक सेगमेंट पे आ गए. सो सी, जब भी आपके पास कुछ ऐसे आइडियाज हों और आप प्रेजेंट करना चाहते हो और आप बनाना चाहते हो, सो व्हाट आई विल से कि you are wrong and your idea is wrong. Just to make prototype if you need investment. तो कोई भी खाली आइडिया पे पैसा नहीं लगाता है. दैट्स अ मिथ कि मैं एक प्रेजेंटेशन डालूंगा, बस फैंटास्टिक आइडिया है और मुझे ये मिल जाएगा. अगर आपके पास प्री डिफाइंड मार्केट नहीं है, मतलब आपने मार्केट वैलिडेशन किया ही नहीं है, मतलब आपके पास सिर्फ आइडिया है, आप एक प्रोडक्ट बना चुके हो मे बी और आप उसके साथ बैठे हो बट आपने उसको मार्केट में कभी ट्रायल किया ही नहीं है. तो अगर आप ये मार्केट ट्रायल ही नहीं किए हो तो अभी आप इन्वेस्टमेंट राइज करने के जोन में नहीं हो, तो डोंट गो फॉर इन्वेस्टमेंट. बट इफ यू आर like presenting your idea to a group of people or maybe like business competition and all, so you should mention कि these are the expected market. and अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, अगर मैंने बोतल बनाया है तो डेफिनेटली आई like before making this bottle I should talk with the companies or maybe the seller who are selling these bottles, right? मैं एक दुकान पे भी जाके बात कर सकता हूँ एक शॉपकीपर से कि अभी आप थर्मस बेचते हो या फिर चिल्ड वाटर के लिए कुछ भी आपके पास हैं आइटम्स वो बेच रहे हो, तो लोगों का क्या एक्सपेक्टेशंस है, कितने लोग खरीद रहे हैं, राइट? सो जस्ट गो एंड हंट नियर बाय लोकल्स, राइट? उनसे बात करो एंड दैट्स हाउ यू विल हैव एन आइडिया प्रॉपरली कि क्या है मार्केट एक्सपेक्टेशंस और आप जो चीज़ बना रहे हो वो सही है यानी, बिफोर मेकिंग और इन्वेस्टिंग योर टाइम in to make a bottle which will chilled make a water chilled for a month, right? So that's very important. So I believe we deliver the answer or like we need to put some more points. Yes. Do we? Yes, we can go ahead, Saurabh. Okay, Yes, we lovely. can go So ahead. we don't have any other questions? No?
As of now, till this, no. No. I mean, Okay. अभी के लिए नहीं. जैसे जैसे pitch deck आएगी आगे, I guess that फिर questions मैं पूछती हूँ Sure, आपसे. sure. So we almost cover कि एक pitch deck कैसा दिखता है. pitch deck presentation देते टाइम या फिर pitch deck बनाने टाइम हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. तो ये सब बातें बहुत हो गई. अब प्रैक्टिकल आते हैं कि pitch deck कैसे बनाते हैं, हाउ टू प्रिपेयर अ परफेक्ट pitch deck, राइट. सो हियर सी मेरे पहले वाले जो स्लाइड्स थे, in that I put it some beautiful pictures and very less content, right? So those were kind of very attractive. उनसे समझाना या समझना बहुत मुश्किल हुआ था, मतलब आसान था, एंड जो ऑडियंस थी वो भी एक ग्रैब कर पा रही थी. बट here now I come with write up, right? So अभी आपको खाली content दिखेगा. So this is boring. So never do this in your pitch deck, just because I need to be very clear, make you very clear कि एक perfect pitch deck कैसे बनाना चाहिए. That's why I have lot of content with me. You may take screenshot or you can analyze this lately कि आपने ये सारी चीज़ें डाली या नहीं. Because in my initial days मुझे अच्छे से याद है, like in many talks, in many webinars, after discussing with many mentors, they used to tell me कि आपके slide में प्रॉब्लम होना चाहिए, टारगेट मार्केट होना चाहिए, आपके स्लाइड्स में टीम के बारे में होना चाहिए, मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ होना चाहिए, यूएसपी होना चाहिए, कंपटीटर स्लाइड होना चाहिए. बट आई वाज ऑलवेज कंफ्यूज कि ओके प्रॉब्लम, बट प्रॉब्लम तो इतना बड़ा है, मैं उसको 2 लाइन में कैसे लिखूँ, राइट. और मे बी टारगेट मार्केट, बट टारगेट मार्केट में क्या होना चाहिए. सो दैट्स व्हाई आई थॉट व्हाई नॉट टू कम अप विद द राइट अप. And you may take screenshot of this and you can analyze this lately for your startup and prepare perfect pitch deck. So these are the numbers or maybe arrangements accordingly what I feel. Okay, so you may like change this. maybe मैंने पहले विजन, वैल्यूएशन, प्रोपोजिशन डाला है, फिर प्रॉब्लम, फिर टारगेट मार्केट, अपॉर्चुनिटी डाला है. बट आप उसको अलग भी कर सकते हो. maybe you can put your problem पहले and then you come up to solution, then you can jump up to target market and opportunity, right? So this is the alignment which I really felt good and which I use. So I just keep this like that. Okay, and of course the very first slide need to be have your company logo. जब भी आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो, सबसे पहली स्लाइड आपकी कंपनी का लोगो होना चाहिए. एंड यू ऑलवेज नीड टू हैव एंड वन लाइनर फॉर योर कंपनी, वन लाइनर और टू लाइनर, जिसको हम एलिवेटर पिच भी बोलते हैं. तो आपके पास हमेशा रेडी होना चाहिए. ओके, ट्रैक सेल्स फॉर यू. तो आप ट्रैक सेल्स फॉर यू में क्या करते हो? तो हम करते बहुत कुछ है, बट अगर आपको एक लाइन में किसी को समझाना हो या आपको मेंशन करना हो, तो वो आप कैसे कर सकते हो. हियर वी कैन गो एंड आई मस्ट शो यू द उबर pitch deck, that how smartly they did it. Is it visible? Uber pitch deck is okay. See, so here it is the Uber Cape, right? So they just mention next generation Cape service. So you always need to have this kind of very first slide. मतलब आपका first slide हमेशा ऐसे होना चाहिए, एक कंपनी की लोगो, एक अच्छा सा पीछे बैकग्राउंड and your company name and one liner like what's your company actually do. So it's very understandable that Uber is next generation car services. Okay, and yes, so we need to jump again in my slide. Okay, so my slide is visible or so Aarti, am I controlling The this? problem side, Yes. the problem side slide is visible, Saurabh. No, I want to jump on my slide. Okay, I don't know how to do it. Okay, just hold on. Okay. Maybe we'll discuss this Uber pitch deck in lastly. Okay, so you are the one who is controlling it. Okay. I thought I am the one who is controlling that. Anyway, so yes, so first slide need to be have your logo and one liner about your company, and second slide must be about your vision and value proposition. Sometimes we write it like vision and mission. Okay, and whenever you are writing vision and mission, always remember कि जब हम ट्वीट करते हैं, so there is a word limit of 140 character and now that is 220 approx, right? So whenever you are writing a vision and mission, so आपको हमेशा वो 220 characters के अंदर ही रखना
सही होता है, बिकॉज दैट्स एक्चुअली इम्पैक्ट, राइट, वो छोटा हो जाता है। वरना हम सबके मिशन और विजन बहुत बहुत बड़े हैं लाइफ को लेके एंड ऑफ कोर्स स्टार्टअप्स को लेके, सो यू डोंट नीड टू मेंशन ऑल ऑफ दोज ओवर हियर, but you need to be very concise with the character. That should be 220 or like 140 to 220, okay? And the next slide, very next slide, need to be the third slide, right? Because first one we have company logo and one liner, the second slide we have vision and mission, the third slide must be about problem statement, that what kind of problem statement or what is that particular problem statement you are trying to solve. Okay, and why I use this target market and opportunity, just because this is very relatable psychological trick, that if I told someone कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, एंड देन इफ आई जंप डायरेक्टली टू मार्केट कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये इतना बड़ा है, इतने लोग इससे परेशान हैं, यहाँ यहाँ लोगों का नुकसान हो रहा है, सो दैट इज वेरी रिलेटेबल और लोग समझ जाते हैं, एकदम घुस जाते हैं। सो you know, like in third slide also you can describe about your problem when you mention that target market and opportunity for your problem. Okay, so first slide should be about logo, the second slide should be about vision and mission, or maybe vision or value proposition, third slide about your problem, fourth slide about your target market and opportunity, what the opportunity you have, right? And fourth slide about your problem. Okay, हमने बता दिया कि ये प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, and then we discuss कि ये solution है। See, मतलब दैट्स यू कम अप विथ लाइक अ सरप्राइज। ओके, अगर आपको पानी रखने में प्रॉब्लम है, 1 महीने तक गर्मी होती है, सी हियर इज द बोतल, वो 1 महीने तक पानी को चिल्ड रख सकता है। सो दैट्स हाउ यू नीड टू रिलेट एंड यू क्रिएट स्टोरी। अगर आरती आपने मार्क किया हो तो हम एक स्टोरी टाइमलाइन ही बना रहे हैं इससे, राइट? कि ये प्रॉब्लम Correct. है, ये इतना Yes. इनको प्रॉब्लम होता है, एंड देन वी कम अप टू लाइक Right. सोल्यूशन कि ओके ये सोल्यूशन है। Right. अब आपने सोल्यूशन बता दिया, देन Right, जंप अप right. टू रेवेन्यू एंड बिजनेस मॉडल। ओके, ये प्रॉब्लम था, ये इतना बड़ा प्रॉब्लम था, ये सोल्यूशन है, दिस इज हाउ वी आर मेकिंग मनी, हम इस तरीके से पैसे बना रहे हैं। एंड देन यू डिस्कस अबाउट योर रेवेन्यू मॉडल एंड बिजनेस मॉडल कि हम इस तरीके से, लाइक हम ये बोतल जो बना रहे हैं, वील सेल दिस बोतल टू सम ऑफ दी शॉपकीपर्स और मे बी होलसेलर्स जो यूटेंसिल्स का काम करते हैं, एंड दे हैव अ लाइक मार्केट एंड दे हैव अ चेन कि अगर हम उनको बेच दें एंड दे विल सेल इट टू different vendors, right? And vendor will sell it to different consumers, right? So that's how you know discuss about your revenue model. Okay, B2B हम ऐसे कर रहे हैं, and B2C के लिए we are going to enlist this bottle, list out this bottle in Flipkart, Amazon and some of the online selling platforms. So that's how you discuss about your revenue and business model. Then of course traction and validation roadmap, that okay कि ये प्रॉब्लम था, इतना बड़ा प्रॉब्लम था, ये सोल्यूशन आया, इस तरीके से हम सोल्यूशन को बेच के पैसा बनाएंगे, ये आपने डिस्कस किया। एंड फिर ट्रैक्शन पे आते हो कि अब तक हमने इतनी बोतल्स बनाई है, इतनी बोतल्स को हमने यहाँ बेच दिया है, एंड नाउ लाइक हमारा जो रोड मैप है वो ऐसा है, लाइक अभी तक हम 200 यूनिट्स बेच रहे थे, जस्ट बिकॉज वी हैव वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज एंड वी कांट मैन्युफैक्चर a bulk amount, so we are selling 200 pieces or maybe 200 units in a year, but we want to grow up and we want to sell to 20,000 next year, 20,000 units next year. So that's how in the slide number 7 you need to describe about your traction कि अभी तक आपने क्या क्या किया है और आपका रोड मैप क्या है, अभी तक कहाँ तक जर्नी की है आपने। Of course then it's come to your marketing, like 8, slide number 8 must be about your marketing and sales strategy कि ओके आपने प्रॉब्लम बता दिया, इतना बड़ा प्रॉब्लम बता दिया, आपने सोल्यूशन बता दिया, आप सोल्यूशन कैसे बेच रहे हो वो आपने बता दिया, फिर अभी तक आपने क्या क्या किया है वो आपने बता दिया। अब आप बताते हो कि आपकी जो स्ट्रेटजी रही है, अभी तक आपने जो काम किया है, अभी तक आपने जो 200 पीसेस बेचे हैं, उसके पीछे आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, वो आपने कैसे सोल्ड आउट किया, राइट? एंड देन यू डिस्कस कि आगे जब हम 20,000 यूनिट्स बनाएंगे तो हम वो कैसे बेचने वाले हैं इन योर स्लाइड ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजी। ओके, सो अभी तक हमने क्या किया, हमने जो मेन होलसेलर थे, यूटेंसिल्स वगैरह बेचते थे, हमने उनको मार्कआउट किया और उनको हमारी बोतल्स दी, एंड नाउ वो लोगों ने अपने चेन में पुट अप करके सेल आउट किया। बट नाउ वी हैव अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी, हमारी फर्दर स्ट्रेटेजी अलग है, दैट वी विल come up with some more products like this bottle and we'll create our own sales channel जिससे हम डायरेक्ट
जो वेंडर्स हैं उन तक पहुंच जाएं, ताकि हमारे जो कॉस्ट है B2B का या फिर जो हमारा कमीशन कॉस्ट सेल इसको जा रहा है होलसेलर को वो कम हो जाए और कंज्यूमर को कम रेट में प्रोडक्ट मिले. सो दैट्स हाउ यू शोकेस योर एंटायर सेल्स स्ट्रेटजी ओवर देयर, राइट? एंड while you are preparing all of this, so always remember that don't just mention everything, क्योंकि अगर आप सब कुछ स्लाइड्स में ही बता दोगे तो आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहेगा. सो ऑलवेज जस्ट नोट डाउन शॉर्ट नोट्स और शॉर्ट पॉइंट्स कि ओके हमने 200 बोतल्स बेचा है, नाउ वी वांट टू सेल 20,000 यूनिट्स नेक्स्ट ईयर, and this year 200 unit we sold by wholesalers by connecting with wholesalers, but for this 20,000 we are creating our own sales channel, right? So that's how you need to very like specific while you are writing on your slides. बहुत ज़्यादा content नहीं डालना होता है आपको. And yes, जब आप ये सारी चीज़ें बता देते हो कि ओके ये प्रॉब्लम था, इतना बड़ा प्रॉब्लम था, ये सोल्यूशन है, इसको हम इस तरीके से बेच रहे हैं, हमारा ट्रैक्शन अभी तक ये हुआ है, हमारे आगे की स्ट्रेटजी ये है, देन द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कम अप, दैट्स योर टीम. कि आपने ये सब कुछ किया और आपने किन लोगों के साथ किया. अब ये सब चीज़ करने में, यहाँ तक पहुँचने में आपको किन किन एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ी. दोज हु आर इन योर टीम, इन विच सेक्टर और फील्ड दे हेल्प यू, राइट? मतलब इस बोतल को 200 से 2,000 यूनिट 20,000 यूनिट लेके जाने के लिए आर दे कैपेबल, राइट? बना तो लोगे लेकिन बेच पाओगे, या फिर बेच तो लोगे या बना पाओगे. सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? सो यू शुड मेंशन अबाउट योर टीम in the very next slide. So Aarti, if you remark, like, you know, we come up with the stories, like we started with problem, Right. and we end up with Exactly. the team who solve the entire problem, right? Right. And that's how the story is created. Right, exactly. And of course, while giving this Exactly. presentation, I cover that story in 12 minute approx. So while you are pitching and you are very specific with your problem, so I think 5 minutes are enough. 5 minutes are very enough. Okay. राइट. तो एक स्टोरी के फॉर्म पे जो स्टार्टअप है वो अपनी बात रख सकते हैं, एंड उसमें जो इन्वेस्टर्स हैं वो बोर भी नहीं होंगे, थोड़ा अलग भी लगेगा उनको, वो आपकी बात सुनेंगे भी. Yes. राइट? एम आई राइट? सौरभ? Yes. You are absolutely right. Yeah. And of course, Saurabh, yeah. sorry to interrupt. No, sir. Yes, sorry to interrupt. One question raised here. One of the viewer asked this, that मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है वो हमको पास्ट की भी बतानी है और फ्यूचर की भी बतानी है, राइट? कि पास्ट में हमने ये किया है और फ्यूचर में हमने ये किया, ये करने वाले हैं, राइट? नो, सी, जब आप स्लाइड नंबर 7 पे हो, दैट इज मेंशन ओवर हियर एज अ 6, ठीक है? जब आप ट्रैक्शन में बात कर रहे हो, देन यू नीड टू डिस्कस. जब आप ट्रैक्शन और वैलिडेशन में बात कर रहे हो तो आपने ये बताना है कि आपने पास्ट में कैसे किया है, राइट? अभी तक हमने 200 यूनिट्स बेचा है, सो दैट वाज आवर रोड मैप कि 200 यूनिट्स हमने इस तरीके से बेचा है. लेकिन व्हेन यू आर डिस्कसिंग अबाउट मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजी, सो यू डोंट नीड टू बी गो वेरी डीप. बस आप यहाँ पे एक लाइन मेंशन कर रहे हो, ओके सो मार्केटिंग चैनल फॉर B2B वी हैव होलसेलर्स. बट अब यहाँ पे जो ट्रैक्शन वाली स्लाइड है आप वहाँ पे पूरे डाल रहे हो कि होलसेलर्स को भी प्रोवाइडेड 20% ऑफ कमीशन, और देन वो होलसेलर बेच रहे हैं एंड ऑल, राइट? तो यहाँ पे आपको बहुत डीपली जाना है. यहाँ पे यू नीड, इन ट्रैक्शन वाला स्लाइड्स यू नीड टू मेंशन एवरीथिंग, राइट? एंड इन मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजी यू नीड टू मेंशन कि अभी तक आपने उसको कैसे किया इन वेरी शॉर्ट लाइन, राइट? लाइक 200 units we sold by wholesaler by providing 20% of commission. That was B2B business. And sales strategy is something which you are preparing for 20,000 to sell 20,000 units. Okay. Yeah. Then of course, like sometimes these 9 slides are enough. These 9 slides are pretty enough while you are giving your presentation for B plan competition, or maybe very first time to our investors. So I don't recommend it to go beyond 9 slides, right? But let's say it's a second meeting of yours with investor, or maybe it's a meeting for a grant, right? Very first meeting for a grant. So while you are presenting your startup for grant, so you need to showcase them financial projections as well, that okay, like after selling 200 units we make profit of 10 lakhs, right? Say, okay, and while we'll sell 20,000 units, so we'll make profit of 10 crores. So that's the financial graph you need to have while you are showing your
PPT second time to an investor who is quite interested, and while you are showing your PPT for any of the grants, government grants and all. Okay, so in financial part, you need to be mention that okay, like making a bottle is costing us around, let's say, 1 lakhs or maybe like 1 lakhs. Okay, and our profit into this, we are selling this bottle in 1.5 lakhs, so our profit is around 30,000, because 20,000 is commission for wholesaler or mediator or broker who are in mid, right? So that's how you need to make assumption for your financial planning as well, that okay, well, we'll make 20,000 units, so we are not going by maybe wholesaler, and we'll directly put in our sales channel, so this commission part 20% will be come up in our profit, and अगर अभी हम 30,000 बना रहे हैं एक बोतल बेच के, तो कल हम 50,000 बना सकते हैं। सो और हमारी कॉस्टिंग और कम हो जाएगी। अभी हम एक 200 यूनिट बनाने में हमारी कॉस्टिंग इतनी थी, लेकिन अब 20,000 बनाएंगे तो बल्क परचेजिंग होगा एंड कॉस्टिंग विल decrease, right? So that's how you need to mention in your financial slide as well. And yes, the competition slide again, very important one. Sometimes what actually happen is, like आपने पूरी स्टोरी बता दी, आपने सब कुछ समझा दिया, बट सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आता, एंड जस्ट यू कम अप विद द कंपटीशन स्लाइड, एंड लेट्स से कि आपने एक कंपनी का नाम मेंशन कर दिया और वो बहुत हाइप में है, क्योंकि लाइक लेट्स से कि ओयो बोल दिया आपने, एंड सडनली the audience try to relate कि okay, this is the company who is doing something like Oyo does. Oyo is quite popular, so everybody knows Oyo, right? So जब आप आपने अपनी पूरी बिजनेस प्लान, पूरी सारी बातें बता दी, बट सामने वाले को समझ नहीं आया, और कंपटीशन साइट में आप जैसे ही आते हो और आप अपने कॉम्पिटिटर को दिखाते हो, सामने वाला रिलेट कर लेता है, ओके, यू आर क्रिएटिंग समथिंग लाइक ओयो, and Oyo is now like they are not doing so good, we have lot of problem with Oyo, so okay, your idea will work out, and you need to come up with different solutions which can actually affect the Oyo market. So that's the thing, competitor side is again very important, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पूरी प्लान यहीं पे समझ में आती है इन्वेस्टर्स को कि ओके, आप ये कर रहे हो, जब वो कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं तो, एंड जो लोग बोलते हैं इन इनिशियल डेज यू माइट फील कि आप ऐसी बोतल बना रहे हो जिसमें 1 मंथ तक पानी चिल्ड रह सकता है, बट ये किसी ने पहले क्यों किया नहीं, आप बोलते हो कि नहीं, इसके कॉम्पिटिटर ही नहीं है। तो अगर ऐसा है तो आप गलत हो। सो यू नीड टू बी हैव वन कॉम्पिटिटर, हर बिजनेस के कॉम्पिटिटर है, लाइक वी आर नॉट आइंस्टाइन कि विल कम अप, और वी आर नॉट एलॉन मस्क that will come up with something very unique that we don't have a competitor, even though Elon Musk have competitor, right? So we all have competitor, and if you don't have a competitor, so your idea is just an idea, it's not something which can go practical in market, right? So be very conscious and do a lot of research about your competitors, and I'll show you probably in the over slide that how to make a proper competitor slide. Okay, so these are something topic which need actually an hour to discuss कि competitor slide कैसे बनाते हैं, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं। आई बिलीव लोगों का मोस्टली डाउट्स इनमें होता है कि एक फाइनेंशियल प्रोजेक्शन बनता कैसे है, डू वी नीड सीए फॉर दैट, नो वी डोंट नीड सीए फॉर दैट, राइट? एंड कॉम्पिटिशन्स एक्चुअल कैसे बनाते हैं, हाउ कैन आई शो माई सेल्फ डिफरेंट फ्रॉम कॉम्पिटिशन, राइट? लाइक ऊबर और ओला, तो मे बी ऊबर था, टैक्सी फॉर श्योर और ऐसी 4-5 कंपनीज थी, और जब ओला आया तो मे बी दे वर थिंकिंग अबाउट कि हम अपने आप को डिफरेंट कैसे दिखाएं कॉम्पिटिटर स्लाइड में। So these are the things which actually need a discussion and which actually need one-to-one mentoring, right? And yes, आपने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, आपने डिस्कस कर लिया प्रॉब्लम, आप कैसे, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, आपका सोल्यूशन यूएसपी क्या है, आपके रोड मैप क्या है, अभी तक आपने क्या क्या किया है, कौन लोग हैं इसके पीछे ये कर रहे हैं। आपने फिर फाइनेंशियल्स भी डिस्कशन कर लिया कि आपकी क्या फाइनेंशियल्स स्ट्रेटजी है, या फिर अभी तक आप जो 20,000 पीसेस आपको बनाने हैं उसके लिए क्या एक्सपेक्टेशंस है। देन यू कम अप टू द इन्वेस्टमेंट एंड यूज ऑफ फंड कि ओके, मैंने आपको सारी बात बता दी, मैंने आपको पूरा अपना बिजनेस आइडिया बता दिया, कि सारी चीज़ें बता दी, टीम से मिलवा दिया। अब आप मुझे बताओ कि लाइक मुझे 20 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो अब आपको ये बताना है कि ओके, आप वो 20 लाख लेके आप एक्चुअल क्या करने वाले हो। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो इन्वेस्टर्स हैं यही ब्रेकआउट हो जाते हैं, बिकॉज आइडिया अच्छा होता है, टीम अच्छी होती है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, बट
फंड यूटिलाइजेशन अच्छा नहीं होता कि people have demand that I need 50 lakhs, but the founder don't know how they are gonna utilize those 50 lakhs. So you need to be have a proper plan. Okay, अगर आप मुझे 50,000 दे रहे हो, 50 lakhs दे रहे हो, so 10 lakhs I'll invest to set up a factory, or 10 lakhs I'll invest to hire people, and then you need to very specific that what kind of people you are going to hire. Okay, I'm creating my own application for 5 lakhs, I need 5 lakhs for that, and you must need to have that investment plan, how you are going to use those funds. Okay, so many of the time I notice most of the entrepreneurs don't have this investment and fund use plan, but they need money, I don't know why. So maybe for a movie date. So you need to be very specific while you are mentioning that you need 30 lakhs, then why you need 30 lakhs and how you are going to use those 30 lakhs. Okay. Yep. So these are some of the things we discussed, that how to prepare and perfect pitch deck. Then these are some of the tips which we need. Actually, yes, Aarti. Yes, so it was a wonderful explanation of a pitch deck. Yeah. And now I think people are waiting for Uber slide Oh. because Okay. Okay. yes, So, because we missed that in between. So Okay. I would request, yes, yes. Yes. I think this will be an example, a practical Right, example, so people right. will be able to connect more. Yes. 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 So of course we already discussed this slide, right? You in the very first slide you need to have your company logo and name and one liner description about your company, right? See uh, how smooth and how like effective this slide is actually looking, right? It can actually grab attention of anybody. So next slide about problem. This is how you need to keep your slides while you are preparing. See, the founder actually uses this small illustrations, images, and not a very like content restrict slide, right? So anybody can easily read those and relate those, right? So these are very eye catchy content, and you can see the front color sizes and where he made them bold, and this bullets points, right? So these are the few examples. Correct. Yes. And see, so this is a sample slide. Okay, so how they mention this, like taxi monopolies reduce quality of service. See, these are the, like, I can say probably very good way to explain about your idea. See the last line, digital hell can now make street hell unnecessary. So these are the thing. These are the creepy line actually, but these are the line which can attract someone attention towards your presentation, right? And this is how they uh, actually drafted their solutions. So you can mark out, right? These are not a content heavy slide, so these are very specific with the word limits, and very quite understandable, right, for anybody. Yes, how it works. So they just mention in the three illustration images. Okay, you need to be have an Uber app in your phone, and then of course you can search for a cab and guaranteed pickup you will get. These are the key differentiation, like from other companies they are doing. Okay, and these are operating principles. So this Uber slide is just to showcase an idea, right? How to prepare and slide, and of course anybody can do that. It's not like it's an Uber company है इसलिए इनके slides ऐसे हैं, आप भी बना सकते हो, आप इससे अच्छा बना सकते हो, right? So इस तरीके से you need to mention. Yep. So we can go for question answer round, Aarti, right? All right. So it was a wonderful slide. I guess हमारे जो viewers हैं, viewers को एक example मिल गया होगा, कि इस तरीके से pitch deck बनाया है. Although Mr. Khandelwal आपने बहुत अच्छे से explain कर दिया है.
you know, थोड़ा सा समय की कमी के कारण, so I would request now Mr. Khandelwal to end this session. Whatever the questions will be there, I will personally connect them to you. I guess I think you will not be have any problem. हमारे जितने भी startups हैं, Definitely. उनको कुछ ना कुछ questions, कुछ ना कुछ mentoring आपसे चाहिए ही है. So मैं उनसे आपको personally definitely connect करवा दूंगी. So कुछ बातें हैं जो मुझे काफी अच्छी लगी, जैसे आपने बताया, आपने एक लाइन बोली थी स्टार्टिंग में कि स्टार्टअप चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती है, टीम चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है. Am I right, Mr. Khandelwal? No. So you need investment for growth, not to run your startup. मतलब अगर अभी आप 200 से 20,000 यूनिट पे जंप अप करना चाहते हो तो तब यू नीड इन्वेस्टमेंट. इट्स नॉट लाइक कि आप 200 पहला यूनिट बनाने के लिए यू नीड इन्वेस्टमेंट. All right. तो कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं. वैसे तो सब कुछ ही बहुत ज्यादा जरूरी है पिच टेक को इफेक्टिव बनाने के लिए. जो मिस्टर खंडेलवाल ने बताया, कुछ पॉइंटर्स हैं, जैसे आप अपना एक्सपीरियंस, जितनी भी टीम मेंबर्स हैं उनका ऐड ऑन करके बता सकते हैं. पिच टेक सिंक में होना चाहिए, उसकी फॉर्मेटिंग बहुत ही सिंपल और काफी यूनिक होना चाहिए, और सारी स्लाइड्स का फॉर्मेटिंग एक जैसी होना चाहिए. इट शुड हैव अ कांस्टेंट लुक. आपको अपने स्टार्टअप का एकदम थरो नॉलेज, डीप नॉलेज होना चाहिए, सो दैट कुछ भी क्वेश्चंस आए, it's your startup, you should know that. Of course, that's a very genuine call. Then we saw the Uber pitch deck. It was a very nice example that Mr. Khandelwal showed that. And the most important, जब भी आप pitch deck को एक्सप्लेन करते हो, उसको एक स्टोरी फॉर्म में बताइए, तो आपका टाइम भी कम कंज्यूम होगा, इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड भी रहेंगे, वो बोर भी नहीं होंगे, एंड ऑफ कोर्स यू विल हैव दैट अपॉर्चुनिटी. द प्रोबेबिलिटी विल बी मोर दैट टाइम. सो दैट वाज अ very knowledgeable session, Mr. Khandelwal, and once again I would like to thank you so much that you came here. You took out time out of your busy schedule. Thank you so much. And I would definitely ask my startups to connect with you, whenever you are free, because I think this is not much. I think ये इतना ही नहीं है. इसमें पिच टेक में बहुत सारी चीजें हैं जो स्टार्टअप्स को सीखने की जरूरत है. So thank you so much, Mr. Saurabh Khandelwal. It was a beautiful session. Thank you so much from the entire team of JIC and Jabalpur Smart City. Thank you so much, sir. Thank you, Aarti, for having me over here. Yes. And I'm quite available if my fellow entrepreneurs need any of the inputs, right? So at least I dedicated a 3 hour of my everyday to entrepreneurs, because that's my vision, that's my personal choice and vision, apart from a busy schedule. And I used to keep posted some of the success mantra of startups in my LinkedIn, in Twitters, in my Facebook page as well. So yeah, keep in touch, and definitely let me know if there is any startups, and I probably contribute anyhow. So I'm always ready. Thank you, Aarti. For sure, sir. For sure. Thank you.